Hello everyone. So this is going to be lecture third of the harmonic analysis, and today we will be discussing some important results. Or the very first result that we have is this, that if H is a subgroup of G, then H closure is also a subgroup of G. अब ध्यान रखिएगा, whenever I am talking about G, I am considering G to be a topological group. All right. ओके सो अगर मुझे शो करना है कि H क्लोजर इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, so I just need to show that if I take any two elements, then their closure, that means it is closed with respect to that operation. So xy also belong to H closure, and it is closed with respect to inverse, so x inverse also belong to that closure. This is what I need to show. Now if G is a topological group, I know that the multiplication map, क्योंकि G एक topological group है, so what I know is that the multiplication map and the inversion map, they both are continuous. Okay, so basically यहाँ पे हम एक result use करेंगे that f from x to y is continuous if and only if fa closure is equal to fa whole closure for all a subset of x. All right, so let us start taking, क्योंकि multiplication map continuous होता है, since multiplication map is continuous, taking A to be H cross H, we get M H cross H closure is contained in M H cross H whole closure. Now observe that what is A cross B closure? It is A closure cross B closure. So that is contained in M H cross H whole closure. अब क्योंकि M H cross H, you can easily observe this that it is nothing but H. So we are left with H closure. So let me write over here. ऐसा क्यों हुआ? Since we can prove this, M of H cross H is actually M of H cross H H हो जाता है ना, और H is nothing but H, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करो A और B, तो वो अगेन H को ही बिलोंग करेंगे, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो H का कोई भी एलिमेंट H में होगा, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज A इंटू E. ओके, so this is the reason. Okay, so this implies so we have this thing, MH closure cross H closure is contained in H closure. So इससे हमें क्या पता चलता है that if I pick any two elements, say X in H closure and Y in H closure, then it's, if I apply M to it, that means M of X comma Y, which is XY, it will be again a member of H closure. यहाँ से मेरे पास ये follow up होता है. Yes, and similarly क्योंकि जो inversion map है वो continuous है, the inversion map is continuous taking A to be equal to H, we get IH closure is contained in IH whole closure. What is IH closure? It is contained in I of H. Now what is I of H? It is simply H inverse का closure. ठीक है, अब क्योंकि जो H है वो एक सब ग्रुप है ग्रुप G का, और मैंने आपको बताया था कि सब ग्रुप्स हमेशा सिमेट्रिक सेट्स होते हैं, राइट? सो उसके लिए जो H इनवर्स होगा
वो H ही हो जाएगा. So it is equal to H closure. यानी कि हमें क्या मिला कि I of H closure is contained in H closure, and this suffices to show that this if I take any element X in H closure, then I of X, which is X inverse, also belong to H closure, right? So from the continuity of the multiplication and continuity of inversion map, and using the result that f from x to y is continuous if and only if f a closure is contained in f a whole closure. So इन तीनों को यूज करते हुए हमने शो किया है कि अगर H एक सब ग्रुप ऑफ G है तो उसका क्लोजर भी सब ग्रुप ऑफ G बनेगा. All right, now let us have a look at second result. What is our second result? So it says that every open subgroup of G is closed. अगर आपने कोई भी एक ओपन सब ग्रुप लिया है ग्रुप G का, say H, then it is closed also. Okay, so let us suppose H be a, this is the proof. So let us suppose H a subgroup of G be open, and we need to show that H is closed. Now in order to show H is closed, we need to show H complement open. Okay, observe that I can write H complement as the translations, union of the translations where X is in H complement, that means G minus H. So I can write H as the union of these translations, okay, where X is in G minus H. I need to prove this. Why does this holds? Okay, तो हम दोनों वेज में करेंगे. तो सबसे पहले लेट करो मैंने कोई एलिमेंट पिक किया जो कि लेट मी टेक y इंस्टेड ऑफ x. ओके, मैंने कोई एलिमेंट पिक किया जो कि h कॉम्प्लीमेंट के अंदर है. ओके, नाउ इफ इट इज इन h कॉम्प्लीमेंट, okay, so I can write it in the form of ey, where E is in H क्योंकि H is a subgroup of group G, so it implies Y is in HY, and which is contained the union of HX where X is in H complement, right? So we are done in the first case कि हमने H complement में कोई एलिमेंट पिक किया और वो इस यूनियन में जा रहा है. ठीक है, now we need to show the other way around. So let us suppose we have union HX में where X is in, okay, इसमें अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, so obviously it will belong to HX for some X in G minus H. So it can be expressed like this for H in capital H. So it implies, okay, now H inverse Y is X. So this element H inverse Y equal to X will belong to H if, अगर ये एलिमेंट Y मैंने H में ही ले लिया तो क्योंकि H इनवर्स ऑलरेडी H में है और Y भी H में है तो इस X को H में होना पड़ेगा, राइट?
So that will imply x belong to H, but that is a contradiction. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, that for some x in G minus H. So what does this implies? That y cannot be in H. So y does not belong to H, or y belongs to G minus H complement. So we are done. अगर हम यूनियन में कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है. क्या इतना दिखाने से हमारा प्रूफ हो जाएगा? सोचो. तो क्योंकि what we have shown over here is, okay, so H complement is the union. H complement is the union of this. अब आपको पता है H open है, उसका ट्रांसलेशन भी ओपन होगा. Yesterday we did this result, right? Translation of open set is also open, है ना? तो HX open हो जाएगा. Arbitrary union of open set is open. ठीक है. So इससे हमें क्या मिला कि H complement is open, right? Now H complement is open implies H is closed, और हमें यही तो प्रूफ करना था that every open subgroup of a group G is closed. Okay, so we are done. Now let us have a look at third result. तो third result कहता है कि let us suppose you have a neighborhood U of identity. Here 1 denotes the identity element of the group G. So it says that for every neighborhood U of 1, there will exist a symmetric neighborhood V of 1 such that VV is contained in U. And in fact, इसी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई भी एक नेबरहुड होता है 1 का, तो आप उसके अंदर एक सिमेट्रिक नेबरहुड ढूंढ सकते हैं. ठीक है. सच दैट सिमेट्रिक नेबरहुड is contained in that, say U. So there is a symmetric neighborhood V such that this V will be contained in U. Okay. So let us first start this theorem. All right. All right. तो लेट करते हैं. यहाँ पे हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मैप की कंटिन्यूटी को यूज करेंगे. सो लेट U be a नेबरहुड ऑफ 1. मान लेते हैं U नेबरहुड ऑफ 1 है जो हमें गिवन है. अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन मैप जो कि G क्रॉस G से G पे जाता है, ये मैप कंटिन्यूअस होता है. सो ये मैप कंटिन्यूअस एट 1 भी होगा. तो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी यूज इन टोपोलॉजी. उसकी मतलब यूज करते करते आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन. हियर वी हैव G क्रॉस G and here we have G and we have the multiplication map M. अगर मैं कोई भी यहाँ पे 1 का नेबरहुड लेती हूँ U, ठीक है, तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, I'll be able to get a neighborhood over here, say V, ठीक है, of M inverse of 1. Okay, the basically, let me first tell you the definition only. So if you have F from capital X to Y, okay, तो हम उसे बोलते हैं this is continuous at a point A if for every
neighborhood U of A, there exists a neighborhood say V for every neighborhood U of there exists a neighborhood V of A such that f of V is contained in this U. Okay, that means अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नेबरहुड लेती हूँ राइट में U, तो मुझे एक नेबरहुड यहाँ पे मिलना चाहिए V का सच दैट f ऑफ V U के अंदर हो. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन. इसी डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैप कंटिन्यूअस है एट 1, सो इससे हमें क्या पता चलता है दैट for this particular neighborhood U of 1, there exists neighborhood and every open set contains a basic open set. So उस तरीके से there will exist neighborhoods W1, W2 of 1 such that M W1, W2 will be contained in U. What is M of W1, W2? So it will be W1, W2. So this is contained in U. So this is what we have. Now, if I define V to be W1 intersection W1 inverse intersection with W2 intersection W2 inverse. Now, why are we taking it to be of this form? ठीक है, इसकी explanation let me give you. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नेबरहुड है U of 1, you can actually find a symmetric neighborhood sitting inside it. तो वो कैसे मिलता है, let me tell you first that thing. तो अगर मैं U intersection U inverse ले लूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सेट है जो कि सिमेट्रिक है, what will be its inverse? It will be U inverse intersection with U. It is again A इनवर्स A के ही बराबर है, यानी कि ये एक सिमेट्रिक सेट है. एंड इट इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ 1, क्योंकि 1 U में भी है और 1 U इनवर्स में भी है. इनवर्स 1 का तो 1 ही होता है. सो दिस U intersection U inverse, what we get is a symmetric neighborhood of 1, and it is sitting inside U, क्योंकि U intersection U inverse is contained in U. This is contained in U. So, using this intuition which I have given you, हम ये वाला सेट ले रहे हैं V to be W1 intersection W1 inverse intersection with W2 intersection W2 inverse. And I will show, first of all, V, observe that V is an open neighborhood of 1. क्यों? क्योंकि first of all clearly 1 V को belong करता है and V open है, क्योंकि ये चारों W1, W1 inverse, अगर एक सेट इनवर्स एक सेट ओपन होता है तो उसका इनवर्स भी ओपन होता है. सो ये दे ऑल आर ओपन, और इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. ओके, सो इससे हमें पता चला कि V इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ 1. हमें एक ऐसा ओपन नेबरहुड ऑफ 1 ढूंढना था such that VV is contained in U. और मेरा क्लेम है यहाँ पे कि yes, VV is contained in U. This is that V. Such that VV is contained in U. Why? Because if I pick any element which is in VV, then it actually belongs to W1, W2. Why? Because V is the intersection
तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट वी में पिक करती हूँ, अगर वो V में जा रहा है तो वो W1 में जाएगा, और अगर वो V में जा रहा है तो वो W2 में भी जाएगा. सो इस वजह से वो W1 W2 में भी होगा. ठीक है. And W1 W2, if you remember, by the continuity of the multiplication map, it was contained in U. So therefore we get VV is contained in U. So therefore हमने एक symmetric neighborhood of 1 ढूंढा, which was given by this, such that it is contained in U. Okay. Now there is a short note. एक छोटा सा note है which we'll be looking at. And it says that if you have two compact sets, then their product AB is also compact. Not the product, actually the multiplication. यहाँ पे A cross B will be called as product and AB will be called as multiplication. Then the multiplication of compact sets is compact and their inverse is also compact. Actually ये बहुत ही ज़्यादा simple है सोचना, and it follows up, if you know this result, that a continuous image of a compact set is compact. If you know this thing, you are done. Okay. क्योंकि हमें मालूम है multiplication map, which is a map from G cross G, it is continuous, and if I pick AB to be compact, then we know कि A cross B in the product topology, it is compact, where this is in G cross G. So M of A cross B, which is AB, is compact where in G. Okay, and similarly the inclusion map is continuous. So if I take I of A, continuous image of compact set, so it will be A inverse, and this is compact in G. So this we have proved, and it was a very easy result. Okay. Now we will have a look at locally compact spaces. ठीक है. अब हम देखने वाले हैं कि locally compact spaces किन्हें कहते हैं. So if you have a topological space is said to be locally compact if for every x in the space there exists a compact neighborhood. That means there exists a compact set K and an open set U such that X belongs to U and U is in K. Okay, so let me tell you here. अगर एक स्पेस है मेरे पास, ठीक है, X let's say,
और उसके हर एक पॉइंट के आसपास मुझे एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिले। कॉम्पैक्ट नेबरहुड मतलब एक ऐसा नेबरहुड जो कि कॉम्पैक्ट हो। नेबरहुड का मतलब फॉर एवरी एक्स मतलब दिस एक्स देयर विल एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू, ठीक है, सच दैट x belongs to u and u is contained in k and this k is compact। अगर हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा कॉम्पैक्ट नेबरहुड के मिल जाए तो हम उस स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, लोकली मतलब हम हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है, हम हर एक पॉइंट पे कॉम्पैक्टनेस की बात करेंगे। और हर एक पॉइंट पे कॉम्पैक्टनेस की बात कैसे की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ नेबरहुड्स। तो अगर हर एक पॉइंट के लिए मुझे कॉम्पैक्ट नेबरहुड मिलता है तो मैं उस स्पेस को लोकली कॉम्पैक्ट कहती हूँ, ठीक है। अब एक टोपोलॉजिकल ग्रुप को ध्यान रखना, हम लोकली कॉम्पैक्ट बोलते हैं इफ इट इज लोकली कॉम्पैक्ट एंड हाउसडॉर्फ, ओके। Topological group is locally compact if it is locally compact and Hausdorff, okay। So if I have the group G, अच्छा ध्यान देना, if I have a topological group G then it is always Hausdorff। A topological group G is always Hausdorff, ठीक है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो हाउसडॉर्फ है या नहीं, क्योंकि एक टोपोलॉजिकल ग्रुप हमेशा हाउसडॉर्फ होता है। रीजन क्या है? अगर ग्रुप हाउसडॉर्फ है तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप जी हाउसडॉर्फ नहीं है, ठीक है, तो हम जी क्वेश्चन सिंगलटन ई क्लोजर कंसिडर करते हैं, ठीक है। व्हाट वी कंसिडर इज, एंड जी इज नथिंग बट this is homeomorphic, I mean this is isomorphic to this, to G quotient singleton E closure, okay। And this quantity is Hausdorff and G can be identified with this, तो इसलिए G is Hausdorff, ठीक है। तो इसलिए हम एक टोपोलॉजिकल ग्रुप को हमेशा हाउसडॉर्फ कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना, हेयर वाई आर वी एबल टू क्वेश्चन इट विद सिंगलटन ई क्लोजर, क्योंकि आपको पता है सिंगलटन ई एक सब ग्रुप होता है, तो उसका क्लोजर भी एक सब ग्रुप होगा। एंड इन फैक्ट यू कैन शो दैट सिंगलटन ई क्लोजर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल आप कैसे शो करेंगे? तो I am giving you it as an exercise. You can actually use the left multiplication map and the right multiplication map जो मैंने आपको बताया था in maybe the lecture 2, that here left multiplication में x inverse y पे map होता है, and right translation also use the fact that they both are homeomorphism, then you will be able to prove this thing, okay। कि सिंगलटन ई क्लोजर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि here you will be proving the left coset will be equal to the right coset। Basically what you will get is a singleton E closure
is singleton A closure, and this is singleton E closure into A. Okay, so this is a homework. So here we end this lecture. Hope you liked it.